अरे बहुत ज्यादा देर तक बोल रहा हूँ. Hello students, welcome to the biology class. How are you all? Hello everyone. Who all have joined? Dhanashri is there, Ruchika, Arpita, Anuja, Piyush, Pranav, Anshul, Sandhya and Samiksha. Where are other people? Still sleeping? But आपका एक लेक्चर तो हो गया है. अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ बच्चों, हाउ वाज योर टेस्ट? टेस्ट कैसा हुआ आप लोगों का? हेलो विनोद, कार्तिक. My God, why you have kept this name? Royal Hunter Karthik. हाँ बच्चों, टेस्ट कैसा हुआ जल्दी से बताओ मुझे. और आप लोगों ने किसी ने भी मुझे मार्क्स नहीं बताए अपने, तो मुझे पर्सनल पे आज अपने मार्क्स भेजोगे, बायो के मार्क्स, राइट? यस, लेक्चर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बेटा. इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड. I guess something went wrong. Check your internet connection. Good morning, Preeti. चलो, तो let's start with our today's topic. याद है ना सबको क्या करना है? After all the classes, you need to send me your marks, biology marks, okay, out of 360 on personal chat, on Telegram group. You are Khushi, okay, but your name is appearing Preeti and it's very difficult to remember all the names actually. Chalo, not an issue. Let's move on to the topic. In the last class, 2 दिन का गैप हो गया हमारा, राइट? तो कल तो आपका टेस्ट था और उसके पहले आपकी क्लास नहीं हो पाई. तो उससे पहले हम पढ़ रहे थे रेप्टिलिया. रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन चार्ट हमने पूरा बना लिया था, राइट? यस. और उसमें से हमको लिविंग जो मेंबर्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है, राइट? देन वी विल स्टार्ट द न्यू फाइलम एवीज. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले, ओके, पीपल आर स्टिल कमिंग. हेलो योगिता. चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों. हाँ जी. तो सबसे पहले ऑर्डर खेलोनिया का मेंबर, ऑर्डर खेलोनिया, right? And its members are turtles, tortoises, right? Yes, so let us discuss about turtles and tortoises. Okay, so definitely the limbs of turtles and tortoises are very strong. ठीक है? In tortoises they are modified, they are meant for walking, and in turtles they are modified for swimming. But with the help of these legs, it can walk also. It can crawl also on sand. ठीक है? आपने देखा होगा मरीन जो टर्टल्स हैं वो एग लेइंग के लिए शोर्स पे आते हैं. ठीक है? तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा क्रॉल करना पड़ता है. So with the help of those limbs, they can crawl. They have very strong limbs actually. Right? Their body is broad and oval. Your name is also Mansi. Beta, it is very difficult me to remember 2 names actually. Why don't you keep your username as your name itself? आप अपना नाम ही क्यों नहीं रख लेते उसको? That will be easy for me also, and आपके लिए भी बार-बार आपको नाम नहीं बताना पड़ेगा. ठीक है? चलो, so we were discussing about turtles and tortoises. Number 1 मैंने आपको बताया इसका कि they have strong limbs and their limbs accordingly modified. Tortoises में crawling के लिए, walking के लिए, and turtles में swimming के लिए. Okay? Now they have broad and oval shaped body. Okay, broad and oval shaped
बॉडी डेफिनेटली लाइक दिस, राइट? यहां पे उसका माउथ होगा, देन लिम्स लाइक दिस एंड टेल। ऐसा ही होता है टर्टल का बॉडी प्लान, एब्सोल्युटली राइट। ओके, now next characteristic feature is that they have exoskeleton, very thick exoskeleton, ठीक है, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में शेल बोल देते हैं। टर्टल का शेल, टॉर्टोइस का शेल, राइट? इट इज वेरी हार्ड, ठीक है, एंड इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स ऑफ these animals. अब the upper dorsal part is known as carapace. This upper dorsal part of shell is known as carapace, and the ventral region yahan pe, this is known as plastron. Plastron, ठीक है? तो upper dorsal part is known as carapace and ventral part is known as plastron, right? Okay, I hope you are making notes, absolutely. चलो जी, नेक्स्ट, इनके पास जॉस तो होते ही हैं बट टीथ नहीं होते हैं। अगर आपके घर में या फिर कहीं आपने टॉर्टोइस देखा होगा तो आपने देखा होगा उनका जो माउथ है, ठीक है, वही थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, वो उसी की हेल्प से बाइट करते रहते हैं, ठीक, जस्ट लाइक दैट, दे डोंट हैव एनी टीथ। तो अगेन वन मोर पॉइंट, टीथ एब्सेंट, टीथ आर नॉट प्रेजेंट। Okay, all right. Then और इंपॉर्टेंट बात क्या है इनके अंदर? इनके अंदर ये बात इंपॉर्टेंट बात है कि मेल, मैंने रेप्टाइल्स में बताया था, दे आर हैविंग पेयर ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन का पेयर होता है, दैट वी कॉल हेमीपीनस। हियर ओनली सिंगल कॉपुलेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट इन मेल्स। ओके, सो males are having single copulatory organ, single copulatory organs. Okay, yes, and example, acha, one more thing, they are oviparous, actually they lay eggs, they are oviparous, right? So they lay eggs, and example हम बात ही उन्हीं की कर रहे हैं, testudo, it is the land tortoise, example I'm writing here, testudo, it is the land tortoise. Then we are having the freshwater terrapins, tryonics, they are freshwater terrapins and they are edible also. Many people used to eat them. Okay, all right. Then we are having marine turtles which are known as chelone. Chelones are marine turtles. Okay, all right. So that is order Chelonia, which is having these many members and characteristic features. All right, I hope it is clear to everyone. Okay, many people are joining now. Sorry, Dhyaneshwar is there, Yash and Mohit is there. Okay, you are Mansi. Okay, all right, guys, I suggest you कि आप अपना यूजर नेम आपके नाम के अकॉर्डिंग ही रखो बेटा, दैट विल बी इजी फॉर बोथ ऑफ अस। चलो, तो नेक्स्ट ऑर्डर जो हमको पढ़ना है, स्नेहा, बच्चों इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? टाइम पे आना है, अदरवाइज यू विल मिस। सर हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम लोग रिवर्स करके रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मुझे पता है कितनी रिकॉर्डिंग आप देख लोगे, बिल्कुल भी नहीं, राइट? चलो, तो अब आगे चलते हैं। इसकी जो एक और लिविंग ऑर्डर था, नहीं नॉन लिविंग ऑर्डर, जिसमें सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दैट इज कॉटिलोसॉरिया, राइट? कॉटिलोसॉरिया, जिसमें मैंने बताया था कनेक्टिंग लिंक होते हैं मेंबर्स बिटवीन
रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, सेमोरिया, सेमोरिया एग्जांपल मैंने बताया था। चलो तो ये आपको याद रखना है। सेमोरिया एग्जांपल पूछा गया है स्टेट बोर्ड के 12th एग्जाम में। 12th के जो बोर्ड हुए ना इस बार, उसमें सेमोरिया पूछा गया है। ठीक है, नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन reptiles and amphibians. So you need to write this semoria. All right. हेलो तेजस्विनी, तन्वी, बच्चों जल्दी आ जाया करो, 10 मिनट लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग। चलो अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर रिंकोसिफेलिया। केलोनिया डन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिंकोसिफेलिया। सबके पास चार्ट बना हुआ होगा डेफिनेटली, तो उस चार्ट को देखते जाएंगे कौन कौन सा ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर विल बी रिंकोसिफेलिया। ठीक है, इस ऑर्डर का भी एकमात्र लिविंग मेंबर मौजूद है, दैट इज टुआटारा। ठीक है, स्फेनोडॉन जिसको बोला जाता है, टुआटारा। चलो तो उसके बारे में पढ़ते हैं। टुआटारा बेसिकली इट इज फाउंड इन न्यूजीलैंड। स्फेनोडॉन मैं लिख देता हूं यहां पे, एग्जाम्पल टुआटारा, दिस इज कॉमन नेम एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज स्फेनोडॉन। Okay, yes, and it is found in New Zealand. It is also known as living fossils. Living fossil मतलब इसके अंदर कई सालों से कोई चेंज नहीं हुआ है। It is as it is, जैसे ये पहले मिलता था। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनमें लॉन्ग टाइम से कोई चेंज नहीं हुआ है, दे लुक लाइक सिमिलर, उन ऑर्गेनिजम्स को बोल देते हैं लिविंग फॉसिल। सो टुआटारा इज नोन एज लिविंग फॉसिल। ठीक है, अच्छा अब इसकी बॉडी जो है वो लिजर्ड जैसी रहेगी, बट लेटरली कंप्रेस्ड रहेगी। जैसे फिशेस में थी ना लेटरली कंप्रेस्ड बोनी फिशेस में, जस्ट लाइक दैट इसकी बॉडी रहेगी लिजर्ड जैसी, बट लेटरली कंप्रेस्ड रहेगी। लिजर्ड की बॉडी ऐसी कंप्रेस नहीं होती ना, दैट इज द डिफरेंस। ऑलराइट, देन देयर लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल। लिम्स are pentadactyl, which means they are having 5 digits, जैसे हमारे भी pentadactyl हैं, just like that इनके पास भी limbs में 5 digits होंगे। ठीक है, all right, and their digits are supplied with claws। ठीक है, उनके पास क्लॉ होंगे, आपने देखे होंगे बर्ड्स के, ठीक है, और लिजर्ड के, इन सब के डिजिट्स के ऊपर ऐसे नाखून से होते हैं। ठीक है, दोज आर नोन एज क्लॉज। सो देयर डिजिट्स आर क्लॉड। ओके, एग्जैक्टली। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे आर हैविंग थर्ड आई। ठीक है, हेड के ऊपर थर्ड आई होती है, which is also known as pineal eye. Okay, so I'm writing it here. They are having third eye on head, known as pineal eye. Okay, exactly. And copulatory organs are not found in tuatara. इसके अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं मिलता है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसका लाइफ स्पैन अराउंड 100 इयर्स होता है। टुआटारा कैन लिव अप टू 100 इयर्स, राइट, पूरी सेंचुरी मार के और फिर जाता है ये। चलो ठीक, अनुजा, आई हैव टोल्ड यू जस्ट लाइक आवर हैंड, दे आर आल्सो हैविंग 5 digits, 1 2 3 4 5, दैट इज पेंटाडेक्टाइल। ओके, चलो जी, ये हो गया
another order, that is Rhynchocephalia. Now we need to discuss order Squamata. And Squamata के अंदर हमने देखा था सब order Lacertilia and Ophidia. Lacertilia consist of all the lizards. L for Lacertilia, L for lizard. Ophidia snakes. ठीक? तो पहले हम lizards, कुछ important lizards के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. चलो. नेक्स्ट इज सब ऑर्डर, यहां पे मैं सब ऑर्डर लिख देता हूं, लेसरटीलिया. लेसरटीलिया. Okay, now definitely I have just told you it is the group of lizards. सारी की सारी छिपकलियां इसके अंदर पाई जाएंगी. ठीक है, बड़ी छिपकलियां, छोटी छिपकलियां, एवरी काइंड ऑफ lizards. Now, first of all, what do you call the study of lizard? कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में कि lizard की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? यस, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा. चलो अभी सब इधर देखो क्लास में. हम लोग ये गपशप टेलीग्राम ग्रुप पे कर सकते हैं, राइट? हमारे पास सिर्फ 1 घंटा ही अवेलेबल है क्लास के लिए. टेलीग्राम की गपशप के लिए पूरा दिन अवेलेबल. चलो सब लोग इधर ध्यान दो. व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ लिजर्ड्स बच्चों? लाइक महादेव इज हैविंग pineal eye. ओके, डेफिनेटली. herpetology, no beta, that is the study of complete reptiles. Specifically आपको lizard की study बताना है. It is known as herpetology is the study of complete reptiles की study को बोल रहे हो आप लोग. चलो मैं ही बता देता हूं. It is called as saurology. Saurology. It is the study of lizards. Okay? Yes, exactly. चलो अब आगे चलते हैं. So study is known as this. Now they are also having pentadactyl limbs and clawed. Their digits are clawed. वो common point है. I am not writing it again. They are also having pentadactyl limbs and their digits are also clawed. Their eyelids are movable. They have eyelids and their eyelids are movable. Plus they are also having nictitating membrane. तो मैं ये पॉइंट क्या लिख देता हूं? Eyelids are movable and they have nictitating membrane. ये हमने एम्फीबियंस के अंदर भी पढ़ा था. It covers the eye and protect, right? Exactly. Yes, Piyush, you are right. All right. Now, another important thing is that they have urinary bladder. Urinary bladder is present in lizards. Urinary bladder is present in lizard, right? Another thing is that lizards show autotomy. What is autotomy? First let me write the word autotomy, which means first they break their tail and then they used to again regenerate it. ये फिर से उसको ग्रो कर लेते हैं. This property is known as autotomy. So आपने देखा होगा lizard अपनी टेल ब्रेक कर लेती है और फिर थोड़े दिनों बाद वो फिर से ग्रो हो जाती है. Property is known as autotomy. अब वो क्यों करती है ऐसा? उसका रीजन ये है कि जब भी उसको खतरा फील होता है, डेंजर फील होता है, ठीक है, उसको लगता है कि कोई मुझे हार्म कर देगा,
या फिर कोई प्रेडेटर उसको कैच करने के लिए उसके पीछे भागता है, तो लिजर्ड यूज टू ब्रेक इट्स टेल। तो उस टेल के मूवमेंट से जो प्रेडेटर है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उसका ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है कि ये इस टेल को वो ग्रैब कर लेता है और लिजर्ड जो है वो भाग जाती है। प्लस जैसे ही टेल ब्रेक होती है उसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है, वो प्रेडेटर की आईज में जाके उसको थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड बना देता है। ठीक है, इतनी देर में लिजर्ड जो है वो भाग जाती है। सो ये इसका अडेप्टिव मैकेनिज्म है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और टेल फिर से ग्रो कर ली जाती है, नोन एज ऑटोटॉमी, राइट? यस, इट शोज रीजनरेशन। Now moving on to the next point, इनके अंदर both the lungs are well developed। आगे जाके हम बर्ड्स पढ़ने वाले हैं, बर्ड्स में एक लंग जो है, दोनों लंग्स में एयर ब्लैडर्स सप्लाइड होते हैं एक्स्ट्रा उसके लिए। यहां पे एज सच वैसा कुछ नहीं है, बट बोथ द लंग्स आर वेल डेवलप्ड। ओके, चलो अब एग्जांपल देख लेते हैं। सो कॉमन वॉल लिजर्ड, कॉमन वॉल लिजर्ड जो हमारे घर पे मिलती है, हाउस लिजर्ड भी बोलते हैं इसको, दैट इज हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस, ऑलराइट, यस, दिस इज कॉमन वॉल लिजर्ड। और इसके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन अभी अपन ने डिस्कस किया, वेल मार्क्ड होती है। नेक्स्ट इज गार्डन लिजर्ड, जिसको हम गिरगिट बोल देते हैं कॉमन लैंग्वेज में। गार्डन लिजर्ड बड़ी सी होती है, राइट? इट इज नोन एज कैलॉट्स, गार्डन लिजर्ड। ठीक है, एंड दूसरा होता है आर्बोरियल लिजर्ड। आर्बोरियल मतलब पेड़ों पर रहती है, गिरगिट भी पेड़ों पर ही रहते हैं। दैट इज कमेलियन, राइट? कमेलियन। Chameleon is viviparous in nature, ovoviviparous actually, ठीक है? Ovoviviparous मैंने आपको बता दिया मीनिंग, definitely. So it is ovoviviparous, chameleon, and it is having power of changing its color according to surrounding. ठीक है, ये कैमोफ्लाज कर सकता है बहुत अच्छे से, प्रॉपर्टीज नोन एज कैमोफ्लाज, चेंजिंग कलर अकॉर्डिंग टू दी सराउंडिंग। Okay. Then we are having Draco, जिसको फ्लाइंग लिजर्ड भी बोला जाता है। ड्रैको, उसके फोर लिम्स और अब्डोमेन, इस रीजन में स्किन की आउटग्रोथ हो जाती है, विच इज फॉर्मिंग पटेजिया। ठीक है, जस्ट लाइक बैट्स, बैट्स के पास होते हैं ना पटेजिया, जस्ट लाइक दैट। और ये एयर में ग्लाइड कर सकती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्लाइंग लिजर्ड। ओके, ऑलराइट। देन वी आर हैविंग द ग्रेट मॉनिटर लिजर्ड, जिसको हिंदी में गो बोल दिया जाता है, एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज वारानस। वारानस, ओके, इट इज गो, द मॉनिटर लिजर्ड। ठीक है, then there are so many other। गिला मॉन्स्टर करके भी एक और लिजर्ड होती है, गिला मॉन्स्टर, जो ओनली पॉइजनस लिजर्ड है। ठीक है, एंड द नेम ऑफ गिला मॉन्स्टर इज हेलोडर्मा। हेलोडर्मा, ठीक है, इट्स कॉमन नेम इज गिला मॉन्स्टर एंड इट इज द ओनली पॉइजनस लिजर्ड। ठीक है बच्चों? Yes, there are specific kind of cells actually found on the skin of chameleon. ठीक है, इनको chromatophores बोल देते हैं। तो chromatophores are having different types of pigment actually, and they perform camouflage with the help of these chromatophores only. Chromatophores is the name. Okay? Yes.
All right, so that finishes your suborder Lacertilia. Now moving on to the next, that is Ophidia. Ophidia includes all the snakes. Suborder Ophidia. It is the suborder of snakes. Now, what do you call the study of snakes, बच्चों? स्नेक्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? अब हर्पेटोलॉजी मत बोलना, वो कॉमन रेप्टाइल्स का है. Study of snakes is known as serpentology or ophiology. Chetrali ichthyology is of fishes. Fish की स्टडी को बोला जाता है. I'm writing it here. It is known as ophiology or serpentology. Okay, exactly. So ophiology and serpentology is the study of snakes. Exactly, right. Now coming to the other characteristic features, their body is long, ठीक है, thin and limbless and very smooth. Their body is thin, long, smooth and limbless. ठीक है, so I'm writing it here. The body is long, thin, smooth and limbless. And they do have scales on their body. It is the characteristic features of members of reptilia. Okay. Next is that their eyelids are immovable and nictitating membrane is absent. So I'm writing it here. Eyelids are immovable and nictitating membrane is absent. All right, exactly. Then urinary bladder is again absent in them. So I'm writing it here. Urinary bladder is absent in snakes. Okay. Then their tongue is long, thin and bifid. Bifid means इनिशियल जो पॉइंट है वो दो पॉइंट में स्प्लिट हो जाना, दैट इज बाइफिड. सबने देखा होगा फॉर्क शेप की टंग होती है इनकी, बार बार बाहर निकालते हैं. एंड टंग हेल्प्स इन द सेंसेशन ऑफ ऑर्डर एंड वाइब्रेशन. ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्नेक जो है वो उसके पास इतनी अच्छी विजुअल कैपेसिटी नहीं होती है, वो अच्छे से देख नहीं पाता है. तो वो क्या करता है, और सुन भी नहीं पाता है, तो वो थ्रू स्मेल बार बार अपने टंग निकालता है. जो भी मॉलिक्यूल एयर में है, जैसे वहां से कोई माउस निकला है तो उसकी बॉडी ऑर्डर के कुछ केमिकल्स उस एयर में होंगे, वो उनसे उसका पता लगाता है और पीछे पीछे जाके उसको कैच कर लेता है. ठीक है, यस. सो टंग इज बाइफिड and helps in detection of odor and vibration. All right, yes. This is scientific name. Tanvi, what you are asking, beta? चलो, अब ये तो हो गया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मेनी स्नेक्स आर वेनोमस. वेनोमस मींस दे हैव पॉइजन ग्लैंड इन देम. ठीक है, और ये बाइट करते हैं तो एनिमल की डेथ हो जाती है.
ठीक है. So generally their venom is proteinaceous in nature and it's a good digestive enzyme actually. ठीक है. अब स्नेक्स के पॉइजन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. कुछ के न्यूरोटॉक्सिक होते हैं which affects neurons basically, and example of these type of snakes in which the poison is neurotoxic are cobra, crate, sea snake and coral snake. They are having neurotoxic poison. Whereas the other type of poison is hemolytic poison. ठीक है, जो आरबीसीज को बर्स्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. And the example of snakes which are having hemolytic venom is viper. Viper is having hemolytic venom. ठीक है. Sir, if tongue is cutted, then definitely they cannot sense these two things. जैकबसन ऑर्गन काम ही नहीं करेगा क्योंकि वो टंग की हेल्प से ही काम कर रहा था. ठीक है, एग्जैक्टली. चलो जी, तो ये हो गया. अब देखते हैं कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्नेक्स. देन नंबर 1 इज पाइथन. ठीक है, एग्जाम्पल्स पाइथन, जिसको हम हिंदी में अजगर बोल देते हैं, राइट. एंड इट इज द लार्जेस्ट स्नेक एक्चुअली, एंड इसकी लेंथ जो है वो 25 फीट तक हो सकती है. वेरी ह्यूज, राइट. यस, एंड इट्स अ नॉन पॉइजनस स्नेक. अजगर इज नॉन पॉइजनस एक्चुअली. देन वी आर हैविंग, ओके, नेक्स्ट देखते हैं सैंड बोआ, दैट इज एरिक्स. सैंड बोआ, एरिक्स. ओके, it is again a non-poisonous snake actually. Okay, now you have seen the blind snake जिसके eyes के ऊपर skin आती है. That blind snake is Typhlops. Typhlops. Okay, and सबसे छोटा snake है Typhlina brahmina, which is found in India, right? Typhlina brahmina. Smallest snake 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है ये, बस. ठीक है, यस. देन नेक्स्ट इज हाइड्रोफिस नोन एज मरी स्नेक. हाइड्रोफिस which is known as marine snake, and it is the deadliest snake. Most venomous poisonous snake होता है हाइड्रोफिस, राइट. एग्जैक्टली. देन वी आर हैविंग इंडियन कोबरा. उसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है एंड इट्स नेम इज नजा. इंडियन कोबरा नजा. नजा इज द कंप्लीट नेम and its poison is neurotoxic. Okay, exactly. Then we are having naja henna. Naja henna, it is again found in India. It is king cobra. ठीक है, बहुत बड़ा स्नेक होता है ये king cobra. All right, yes. And it is among the largest poisonous snakes. That's why it is called as king cobra. Then we are having crate, whose name is Bungarus, and it is again neurotoxic. Crate or Bungarus. All right. So these are some examples of snakes actually. Yes, exactly, Alkesh. Anacondas are again different, but they are also very large actually, and anacondas are ovoviviparous. ठीक है? Yes, rattlesnake is again the poisonous skin.
Snake actually, all right. So that was about the snakes. Now, two important things I'm going to tell you. स्नेक बाइट का जो ट्रीटमेंट है वो एंटी वैनम का इंजेक्शन होता है, ठीक है। अब एंटी वैनम इंडिया के अंदर दो जगह बनाए जाते हैं। फर्स्ट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन मुंबई, दैट इज हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, ठीक है। आई एम राइटिंग इट, यहां पे लिख देता हूं मैं। फर्स्ट इंस्टीट्यूट इज हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, हॉपकिंस Institute, which is present in Mumbai, and second institute is situated in Shimla, that is Central Research Institute. Central Research Institute, Shimla. These two institutes manufacture anti-venoms, all right, for the treatment of snake bite. Okay, all right. Parth, they are having the opening known as cloaca. I have already told you, reptile ka common feature. So through this pore, they lay eggs actually, right? I have told you the marine sea snake, it is the most poisonous hydrophis, right? Then which black mamba, king cobra, yes, everyone we have discussed. All right. चलो, तो ये हो गया आपका ना। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपने देखा होगा स्नेक्स को भी जैसे जू होते हैं आपके जोलॉजिकल पार्क्स, वैसे ही स्नेक्स का भी कलेक्शन होता है, एंड दैट कलेक्शन इज नोन एज सर्पेंटोरियम, एंड द लार्जेस्ट largest serpentorium of India is located in Chennai, ठीक है। All right, so that was about the snakes. Now moving on to the next order, that is crocodilia. चलो crocodilia के बारे में डिस्कस करते हैं। Now, crocodilia shares a common superorder with dinosaurs. Crocodilia एक common superorder share करते हैं dinosaurs के साथ में, ठीक है। But dinosaurs are extincted now, so we will study about crocodilia. Next order, crocodilia. Right? Exactly. अब इसके अंदर नाम खुद ही बता रहा है कि क्रोकोडाइल्स होंगे, एलिगेटर्स होंगे, ठीक है। एंड दे आर एम्फीबियस इन नेचर, दे आर नॉट एम्फीबियंस बट दे आर एम्फीबियस इन नेचर, व्हिच मींस दे आर रेप्टाइल्स बट दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो कई लोग इसको इस नेचर की वजह से रेप्टाइल मानते नहीं है, वो याद कर लेते हैं इसको एम्फीबियंस में। नो, इट्स अ परफेक्ट रेप्टाइल एक्चुअली, मोस्ट एडवांस बेसिकली, ठीक है। ऑलराइट, देन ये लार्जेस्ट मॉडर्न रेप्टाइल हैं। पहले तो मैं लिख देता हूं इनका पॉइंट, दे आर एम्फीबियस
इन नेचर, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया। देन दे आर द लार्जेस्ट मॉडर्न रेप्टाइल्स। मॉडर्न रेप्टाइल्स, मैंने बोला ना मोस्ट एडवांस, दैट्स व्हाई मॉडर्न, मॉडर्न रेप्टाइल्स। ओके, ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट इज देयर स्किन इज कवर्ड विद बोनी स्क्यूब्स। ऑल राइट, देखा होगा आपने क्रोकोडाइल की स्किन कितनी हार्ड होती है। सो इट इज कवर्ड विद स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज बोनी स्क्यूब्स। Skin is covered with bony scutes, right? Exactly. Okay, चलो तो ये हो गया। देन इसके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा। यस, बाकी सारे रेप्टाइल से अलग 4 चेम्बर्ड heart is present. Then in the abdomen they are having diaphragm. ठीक है, डायफ्राम और किसी रेप्टाइल के अंदर नहीं होगा, बट क्रोकोडाइल्स के अंदर ये मिलेगा डायफ्राम। ठीक है, इट सेपरेट्स थोरैसिक कैविटी फ्रॉम अब्डोमिनल कैविटी। हमारे अंदर भी डायफ्राम होता है, सबको पता है, राइट? सो डायफ्राम इज प्रेजेंट इन देम। ओके, all right, then what else? Urinary bladder is again absent in them. Urinary bladder is absent in them, and they have thecodont teeth. I'm writing it here, thecodont teeth, which means teeth are present in bony sockets. I have told you in the starting about thecodont teeth. ठीक है, so they are having thecodont teeth just like humans. Humans are also having thecodont teeth. So that is the important characteristics. Now, example of crocodilia are crocodilus. Example, I am writing it here. Crocodilus, right? Common name is crocodile. Then you are having Gavialis. Gavialis, okay, commonly known as घड़ियाल, and it is found in river Ganges. गंगा नदी के अंदर ये मिलते हैं। ठीक है, अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा इन तीनों में आपको। Then next is alligator. Alligator, इसका कॉमन नेम भी alligator ही है। ठीक है, अब इन तीनों के तीनों डिफरेंट होते हैं। आज तक आपको पता था कि बस क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, दे ऑल आर मगर, इनको मगर बोलते हैं। नो, एक्चुअली दे आर डिफरेंट। क्रोकोडिलस ये इंडिया और इंडिया के आसपास वाली कंट्रीज में ही पाया जाता है। ठीक है, ये और कहीं पे नहीं मिलता है। एंड इट इज द मोस्ट अग्रेसिव, ये बहुत अग्रेसिव होता है, और इसका स्नाउट ऐसे वी शेप का होता है, नॉट परफेक्ट वी बट लाइक दिस। इट इज हैविंग पॉइंटेड स्नाउट लाइक दिस। देन कमिंग टू गैवियालिस, ये ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता है, होता बहुत बड़ा है, ठीक है, बट ह्यूमंस के लिए डेंजरस नहीं है। ये क्या खाता है? ये फिशेस खाता है। क्यों? क्योंकि इसका स्नाउट बहुत ही पतला और पॉइंटेड होता है, जस्ट लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, आपने देखा होगा, इट इज गैवियालिस, राइट, बहुत ही पतला स्नाउट होता है। देन कम्स द एलिगेटर। ठीक है, एलिगेटर बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक, और इनका जो माउथ है इट इज ऑफ यू शेप्ड एक्चुअली। ये चाइना, अमेरिका, यहां पे पाए जाते हैं। ठीक, आपने डिस्कवरी में जो भी देखे हैं दोज आर एलिगेटर्स एक्चुअली। अगर इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्री का दिखा रहा है देन इट इज मगर, क्रोकोडाइल। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रोकोडिलस, गैवियालिस एंड एलिगेटर। क्लियर टू एवरीवन? आज के बाद से पहचान लोगे इजीली? डेफिनेटली।
एलिगेटर को हिंदी में एज सच कोई नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे यहां मिलता भी नहीं है, ठीक, तो उसको एलिगेटर ही इंग्लिश नेम के साथ ही जाना जाता है। क्रोकोडाइल की स्टडी इज अगेन हर्पेटोलॉजी के अंदर ही आएगी, ठीक है। चलो, तो दैट्स ऑल अबाउट द रेप्टिलिया। नाउ वी नीड टू डिस्कस, नाउ वी नीड टू स्टार्ट फाइलम एवीज, और नॉट फाइलम एक्चुअली, ऑल राइट, क्लास एवीज। अच्छा, एक और टर्म बता दूं मैं आपको रेप्टाइल्स में, डायनासोर्स के बारे में, ठीक है। सो डायनासोर्स वर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, दो टाइप के डायनासोर्स थे एक्चुअली, एंड इनको एंशियंट रेप्टाइल्स बोला जाता है बिकॉज नाउ दे आर नॉट प्रेजेंट, दे आर एक्सटिंक्टेड, ये गायब हो चुके हैं। अच्छा, रेप्टाइल्स लाइक डायनासोर्स जो थे, डायनासोर्स डायनासोर्स सोर्स, सोरोलॉजी, बड़ी छिपकली, राइट। सो रेप्टाइल लाइक थे एंड बर्ड्स लाइक थे, ठीक है। दो तरह के डायनासोर्स मिलते थे, रेप्टाइल्स लाइक एंड बर्ड्स लाइक। Okay, now reptiles like dinosaurs are known as Saurischia. What do you call it? You call it Saurischia. Okay, and example of reptile like dinosaurs are your Tyrannosaurus, right? Then you are having the Brontosaurus, which is herbivorous, बहुत बड़े बड़े, सबने देखे हुए डायनासोर्स की मूवीज, तो ये नाम भी आपको काफी फेमिलियर लग रहे होंगे। टिरानोसोरस, जो जनरली जो गॉडजिला मूवीज में दिखाया जाता है डायनासोर, राइट, कार्निवोरस, वेरी फेरोशियस, दैट इज टिरानोसोरस, टी-रेक्स भी बोलते हैं जिसको। और प्लांटोसोरस, बड़े बड़े गर्दन वाले, ठीक है, बहुत ही हैवी, बट दे आर हर्बीवोरस, ठीक है, दे आर नॉट कार्निवोरस। यस, एग्जैक्टली, लेग्स थे, ठीक है, बट नॉट परफेक्टली डेवलप्ड लेग्स, और उनकी बॉडी बहुत हैवी थी, और सिर्फ ये फीचर रख के आप रेप्टाइल्स नहीं बोल सकते ना, वो जस्ट नाम रखा था, देन डाइवर्सिटी मिलती गई अंदर, ठीक। अब आप बोलोगे कि बर्ड्स लाइक ये तो उड़ रहे हैं, तो ये तो रेप्टाइल हुआ ही नहीं। सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वी आर स्टडीइंग बायोलॉजी। Okay, then next is bird-like dinosaurs, that is Ornithischia. Ornithischia. Okay, yes, and example of this is Ankylosaurus. Ankylosaurus, ये भी आपने देखा होगा, उड़ने वाला डायनासोर, राइट, जुरासिक पार्क सीरीज सबने देखी हुई है, ठीक। So that is Ornithischia, birds like dinosaurs which can fly. Okay, now another important thing is that bird and reptiles के अंदर एक connecting link, अभी डायनासोर नहीं देख रहे अपन, सेपरेट एक और important point, Archaeopteryx, ठीक है। It's a crow-sized bird which is having common characteristics from birds and reptiles. So that's why it is known as the connecting link, or basically the missing link between birds and reptiles. ठीक? आप इस पॉइंट को नोट कर लो, this is very important. उनके पोता पोती अच्छा, डेफिनेटली कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अभी भी वो कहीं है
डीप सी में या फिर उनके एग्स कहीं पे हैं, बट अभी तक कोई साइन तो ऐसा दिखा नहीं कि वो प्रेजेंट हो इस अर्थ पे। एंड डोंट वरी 2000 ये दिस 2020 ये बहुत सारी ऐसी चीजें लेके आ रहा है, तो अगर डायनासोर जिंदा हुए तो वो भी इसी साल में आ जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, okay, now let's start the new class Aves. Class Aves. Okay, exactly. अरे बाप रे, मिस्टर आर्य, कहां कहां की बातें आपको आती हैं भाई। अश्वत्थामा नहीं दिखा, हो सकता है 2020 में वो भी दिख जाए। एंड देयर इज अ टेंपल इन नॉर्दर्न इंडिया जहां पे ऐसा बोला जाता है कि सुबह सुबह अश्वत्थामा जो है वो पूजा करने आते हैं मंदिर में। ठीक है, चलो, so that we will discuss later on. Now let's start new class ABs, and this is the class of birds. All the birds are there, right? And the study of birds is known as, everyone knows, ornithology. What do we call it? We call it ornithology, right? Exactly. ठीक है, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। एंड देयर इज अ ग्रेट साइंटिस्ट इन इंडिया व्हिच इज नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली, ठीक है, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, कॉमनली नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने बर्ड्स की स्टडी में, ऑर्निथोलॉजी में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, राइट? एग्जैक्टली। देन बर्ड्स जो हैं, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुई हैं, सो दैट्स व्हाई बर्ड्स आर कॉमनली नोन एज ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। ठीक है, ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स एक्चुअली। So these are common points, I'm not writing actually. Then birds are oviparous, strictly they are oviparous, they lay egg, and जो egg हैं उनको nest बना के वहां पे parental care दी जाती है। अब again nest की study is known as nidology. Study of nest is known as nidology, and study of eggs is known as oology. Oology. It is study of nest, it is study of eggs actually. ठीक है बच्चों? All right. And they are known as glorified reptiles, I have already told you. Okay. Now their body is boat shaped actually, like this. ठीक है, boat shaped, and it is divided into head, neck, trunk and tail. Their body is divided into head, neck, trunk and tail. ठीक है, their tail is very flexible and it helps in changing the direction while flying. ठीक है, yes, and they are very beautiful creatures actually. yes यश, हर चीज की स्टडी होती है बच्चों। so birds are very beautiful actually. why? because they have different types of feathers in them. their body is covered with feathers actually, right? Right. So their body is covered with feathers, and the arrangement of wings on the body is known as pterylossis. The arrangement of wings
on body is known as terylossis. Okay? Yes, you need to remember this. Terylossis is the arrangement of wings on the body of bird. Right? अब different types के wings होते हैं, वो हम end में पढ़ने वाले हैं. What are the different types of wings actually? Another thing is that they are also having two pairs of limbs. Forelimbs are modified into wings, and hind limbs are there for uh, walking. ठीक है? Running can some birds can run also very fast. Ostrich is there, right? For holding branches. So hind limbs are just like legs only. ठीक? अब another thing is that they are homeothermic. सबसे पहला क्लास जिसमें homeothermic organisms मिलते हैं. Homeothermic means warm blooded. ठीक है? They are also known as endothermic. So they are homeotherms, warm blooded animals, right? Four chambered heart will be there, and four chambered heart. Then what else? ये भी लिख देता हूं मैं, four chambered heart. ठीक है? Their skin is not having any type of gland. ठीक है? Their skin is covered with feathers. It is not having any type of sweat gland, sebaceous gland, no. But tail के junction पे एक specific gland होती है, जिसको commonly बोल देते हैं preen gland. ठीक है? They are having preen gland, which secretes oily secretion जो feathers को soft और waterproof बनाने में help करता है. ठीक है? Preen gland. It is present at the junction of tail. ठीक है? That structure is known as uropygium. It is present at the uropygium. ठीक है? Yes. All right. Then definitely they are having clawed digits, which I have already told you. Now, another thing is that their esophagus is having a modified organ known as crop. Their esophagus is having a modified organ known as crop. And this crop is having another organ, gizzard. गिजर्ड के अंदर ये कुछ स्टोन्स रखते हैं, खुद ही बाहर से स्टोन अपने गिजर्ड के अंदर रखते हैं, ताकि जो भी ये सॉलिड फूड खा रहे हैं, सीड्स वगैरह, उनको ये अच्छे से क्रश कर पाए और इजीली डाइजेस्ट कर पाए. ठीक है? दैट्स व्हाई फॉर क्रशिंग ऑफ फूड गिजर्ड इज हैविंग स्टोन इन इट. ठीक है? ऑलराइट. देन जो पीजन है, कबूतर, उसके अंदर milk secrete होता है, but they are not having milk secreting gland. Actually that milk, pigeon milk, is the secretory product of crop actually. खाना खाते हैं, उसको क्रश करके और मिल्की बना देते हैं, and that will be feeded to young ones. ठीक है? Through mouth. आपने देखा होगा birds mouth से अपने बच्चों को feed करवाती है. तो pigeons के अंदर that specific secretion known as pigeon milk is the crop milk actually. Okay? All right. All right. So आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों. बाकी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है? चलो, तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय. टेक केयर.